Dear students, Assalamu alaikum. Today we discuss the first chapter of General Science for class 5. So the first chapter of this book is the classification of living things. The classification is very important for the living things. In this chapter we will discuss about the classification, the kingdoms, knows about the vertebrates and invertebrates, flowering and non-flowering plants. So students, the first topic of this chapter is the classification. But first of all, we discuss the introduction of this chapter. Previous classes में आपने ये पढ़ा है कि living things को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, that is the plant and animal. But in this grade and in this chapter you will study about the different forms of animals and plants. Here is the activity in which we place the name of living things which we see around us. You can see that the living things are divided into plants and animals, which are the main categories of living things. For example, the rose plant from the plant category and the cat from the animal categories. You can also place here some other names of plants and animals. Now the classification. The definition of classification is the process of grouping the things in groups and subgroups is known as classification. मतलब कि वो प्रोसेस जिसमें हम ग्रुपिंग करते हैं चीज़ों की, ग्रुप्स उनके ग्रुप्स बनाते हैं और उनके सब ग्रुप्स बनाते हैं, इट इज़ नोन एज क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन में एक जैसी चीज़ों को एक ग्रुप में रखा जाता है. अब वो बेस हो सकती है शेप, साइज, फिजिकल स्ट्रक्चर एंड कलर ऑन विच वी क्लासीफाई द थिंग्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. Now here the classification of living things. क्लासिफिकेशन को समझने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स का जानना बहुत ज़रूरी है. अगर हम किसी एक ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेते हैं तो हम उस ग्रुप के तमाम डिफरेंट एलिमेंट्स को आसानी से समझ सकते हैं. द फाइव ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स. These are the 5 main groups of living things. So students, in groups को specific term दी गई है, that is the kingdom, and the definition of kingdom is 5 broad taxonomic categories into which organisms are grouped based on common characteristics is known as kingdoms. मतलब कि हमारे पास ये 5 ब्रॉड टेक्सोनोमिक कैटेगरीज जिनमें ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग की जाती है, जिनमें ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग की जाती है उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए इट इज़ नोन एज किंगडम्स. टेक्सोनोमिक टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द टेक्सोनमी. Taxonomy is the branch of biology in which we study about the plants, the classification of plants and animals. इन 5 मेजर ग्रुप्स को स्पेसिफिक टर्म्स दी गई हैं. दैट इज़ बैक्टीरिया को टर्म दी गई है किंगडम मोनेरा, एल्गी किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई किंगडम फंजाई, प्लांट किंगडम प्लांटिया, एनिमल किंगडम एनिमेलिया. Now one by one we discuss these 5 kingdoms, means kingdom monera, kingdom protista, kingdom fungi, kingdom plantia and kingdom animalia. So first of all the kingdom monera. Kingdom monera के जितने भी organisms होते हैं तमाम के तमाम unicellular होते हैं और microscopic होते हैं. The term unicellular means the organism is made up of only one type of cell, and the microscopic mean we cannot see with our naked eye, so use the specific instrument known as microscope. Bacteria is the example of kingdom monera. Number 2 is kingdom protista. Kingdom protista के तमाम organisms बहुत से ही ज़्यादा small होते हैं, means unicellular and microscopic. The algae is the example of kingdom protista. The third one is kingdom fungi.
किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेलुलर होते हैं एंड looks like the fluffy material. The mushroom is the type of fungus. Now, the fourth one is kingdom Plantia, and the organisms of kingdom Plantia are multicellular. For example, rose, maize, wheat, etc. इनकी खसूसियत ये होती है कि ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं. Also found in water as well as on land. The fifth one is the kingdom Animalia. Kingdom Animalia के organisms भी multicellular होते हैं, means made up of many types of cell. For example, cow, goat, cat, dog, etc. ये organisms अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, different kinds के होते हैं and live almost anywhere on land, in water and in air, etc. So it is the topic of day, and your home assignment is define classification, define taxonomy, define kingdoms, and also practice to draw some diagrams. For example, cat, butterfly, mushroom. Dear students, listen carefully and remember it. Stay blessed. Allah Hafiz.